वेलकम टू द कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। Legal aspect of business means all the laws that control how business start, operate and close. Every business activity, making a contract, selling goods, hiring employees, borrowing money, advertising, etc., must follow certain laws. Importance of legal aspect of business: to protect the rights of buyers, sellers, and employees, to avoid disputes and penalties, to maintain ethical and fair business practices, to build trust among consumers and investors. Next, Indian Contract Act 1872. This is the foundation of all business laws. It tells how agreements become enforceable contracts. Meaning of contract. Section 2H. A contract is an agreement enforceable by law. Agreement equal to offer plus acceptance. Contract means agreement plus legal enforceability. Example: A offers to sell his car to B for 3 lakh. B accept the offer. This is an agreement. If both have legal capacity and there is lawful consideration, it becomes a contract. Essential of a valid contract: offer and acceptance. Offer and acceptance. One makes an offer, other accept it. A offer to sell a book, B accepts. तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन. समथिंग ऑफ वैल्यू इन रिटर्न. ए सेल्स गुड्स वर्थ 1000, बी पेज 1000. तो ये लॉफुल कंसिडरेशन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. Capacity of parties must be of sound mind and major age 18 plus. A contract by a minor is void. अगर माइनर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है void होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. फ्री कंसेंट. नो कोरिशन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस. इफ ए साइन एट गन पॉइंट इट्स नॉट फ्री कंसेंट. तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. लॉफुल ऑब्जेक्ट. पर्पज मस्ट बी लीगल. कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्मगलिंग इज इलीगल. अगर स्मगलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो वो इलीगल है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. Certainty and possibility of performance. Terms must be clear and doable. A compromise to bring stars from sky. Impossible contract. तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो. अब आसमान से तारे लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स: वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स. सबसे पहले है वैलिड. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? फुलफिल ऑल लीगल रूल्स. सेल ऑफ एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स फॉर 500. तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. वॉइड, कांट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ. कांट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ. एग्रीमेंट विद द माइनर, तो वो वॉइड हुआ. वॉइडेबल, वन पार्टी मे कैंसल. कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रेशर. प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो वो वॉइडेबल होगा. इलीगल, फॉरबिडन बाय लॉ. ड्रग ट्रेडिंग. एक्सप्रेस, टर्म, स्पोकन, रिटर्न. रिटर्न एग्रीमेंट. एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए. जो स्पोकन हुआ
वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न में होना चाहिए। इम्प्लाइड फॉर्म बाई कंडक्ट, पैसेंजर इन अ बस। Executed contract fully performed, cash sale. Executory to be performed later, order for future delivery. Discharge, end of contract. By performance both do their duties. By agreement both agree to cancel. By impossibility, example, death of singer before concert. By lapse of time after limitations period. By breach, one side fails to perform. A agrees to point B's house by Sunday but fails, B may sue A for breach. Remedies for breach: damages, monetary compensation, specific performance, court orders actual completion, injunction stop one party from doing something, rescission, contract cancelled. Special contract: indemnity, one promise to protect another from loss, insurance contract. Guarantee, third party ensured debt payment. Father guarantees son's bank loan. Bailment, goods given for temporary purpose. Giving car to garage for repair. Place goods as security for loan. Jewels placed in bank. Agency, one act on behalf of another. Sales agent selling product. Sale of Goods Act 1930. This law controls buying and selling of goods. Key terms: goods, all movable property, not land or money. Seller transfer property, buyer receive goods. Sale Varsi agreement to sale. Sale ownership transferred immediately. Agreement to sale ownership to be transferred in future. Risk passes to buyer और एग्रीमेंट में रिस्क रिमेन्स विद सेलर. सेल का एग्जाम्पल है इंस्टेंट कैश सेल और एग्रीमेंट का एग्जाम्पल है सेल आफ्टर डिलीवरी नेक्स्ट मंथ. कंडीशन एंड वारंटीज. कंडीशंस: एसेंशियल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच, buyer may reject goods. Warranty, minor terms, breach, only damages. Example: if a car sold as new is actually old, breach of conditions. Unpaid seller's right. Right for lien, retain goods. Right of stoppage in transit. थर्ड है राइट ऑफ रीसेल. नेक्स्ट है इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विद promissory note, bills of exchange and checks. Meaning, negotiable means transferable by delivery or endorsement. Types: promissory note, written promise to pay. I promise to pay B 5,000 rupees signed by A. तो ये promissory note हुआ. Bill of exchange, written order to pay. A order B to pay 1,000 to C. ये bill of exchange हुआ. और check, bill of exchange drawn on a bank. Next है dishonor of check. If check bounces due to insufficient funds, legal offense. Section 138. Companies Act 2013. This law controls the formation, management and winding up of companies. Meaning of companies: a company is an artificial person created by law with separate legal identity and limited liabilities. Example: Tata Motor is a separate legal entity. Shareholders are not personally liable for its debt. Type of companies: private company,
can't invite public max 200 members. Public company can invite public. One person company OPC, only one owner. Section 8 company for charity. Next, memorandum and articles. MOA, Memorandum of Association, main objective and scope of business. Or Article of Association, internal rules and management procedures. बिजनेस या फर्म के इंटरनल जो रूल होते हैं वो AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर आते हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ बिजनेस जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आते हैं. नेक्स्ट, डायरेक्टर एंड ड्यूटीज. डायरेक्टर्स रन द कंपनी एंड मस्ट act in good faith, avoid conflict of interest, follow company law and ethics. Winding up, company make laws by tribunal order, voluntary decisions, non-compliance with law. Consumer Protection Act 2019, protect consumer from unfair trade and defective products. Consumer rights, right to safety, right to information, right to choose, right to be heard, right to redress, right to consumer education. Example, if you buy a faulty fridge, you can file a complaint in the consumer form. Next, redressal agency. District commission up to 1 crore rupees. State commission 1 to 10 crore और national commission above 10 crore. 10 crore से above अमाउंट का कंप्लेंट होगी तो वो नेशनल कमीशन डील करेगा, और 1 से 10 करोड़ तक स्टेट कमीशन डील करेगा, और अप टू 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही डील करेगा. कंपटीशन एक्ट 2002 प्रिवेंट्स अनफेयर कंपटीशन एंड मोनोपोलीज. की ऑब्जेक्टिव्स: स्टॉप प्राइस फिक्सिंग और कार्टेल्स, कंट्रोल मर्जर्स दैट हार्म competitions, prevent abuse of dominant position. Example, if two big cement companies fix prices, CCI Competition Commission of India can penalize them. Intellectual property right, IPR, intellectual property right. Protect creation of the mind, invention, designs, trademarks, etc. Type: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट बिजनेस फॉर्मूलाज. ट्रेड सीक्रेट तो आईपीआर के टाइप्स सभी बताए मैंने: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट. तो पेटेंट प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोटेक्ट्स कौन ने? इन्वेंशन, एग्जांपल न्यू मशीन. और कॉपीराइट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क, बुक और बुक फिल्म. ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स ब्रांड नेम, लोगो. एग्जांपल नाइक का साइन है टिक जैसा. डिजाइन प्रोटेक्ट शेप, अपीयरेंस. एग्जांपल कोका कोला बोतल. ट्रेड सीक्रेट बिजनेस फार्मूला, KFC रेसिपी. Information Technology IT Act 2000. IT Act 2000 deals with cyber laws and electronic transactions. Key provisions: legal recognition of e-contract and e-signatures, punishment for hacking, identity theft, data breach, regulation of cyber cafes and online payments. Example, a hacker stealing ATM details, punished under IT Act. Banking and financial law.
Important acts. RBI Act 1934 creates and empowers Reserve Banks. Banking Regulation Act 1949 controls bank operations. Negotiable Instrument Act 1881 governs check. Insolvency and Bankruptcy Code 2016 helps resolve corporate insolvency quickly. Foreign Exchange Management Act FIMA 1999 controlled foreign currency and trade, ensured India's balance of payment stability. Example, if an Indian company receives payment from the USA, it must follow FIMA rules. Next, environmental and CSR laws. Environment Protection Act 1986 control pollution and waste. CSR corporate social responsibility. Company must spend 2% of profit and social welfare के अंडर आते हैं एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एटसेट्रा. एग्जाम्पल, इन्फोसिस फंड्स रूरल एजुकेशन अंडर CSR. Important doctrines and case laws. Doctrine ultra vires, meaning of ultra vires, company doing beyond MOA powers. Example, Void Act. Indoor means outsider protect if they assume internal. Valid contract. Salmoni versus Salmon. Company equal to separate legal person. Landmark case. Revision tips. Learn main act with year and sections. Remember definition plus examples. Practices MCQ and case-based questions. Study recent amendments like CSR, Consumer Protection 2019. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel.